Welcome, and India Forums is celebrating my birthday, and this is going to be my first cake. For this birthday. So yeah, thanks India Forums. It's a little odd for me. I'm not a cake person. I'm not a birthday person, but thank you. Wish तो अंदर कर लूँगा, and I'll blow the candle. Hi friends, come and wish happy birthday to the cute and very handsome Shravan Reddy. He turns 29 today. Thank you. Happy birthday to me, and thank you please. Plans तो कुछ नहीं है मेरे. As I said, I really don't, not exactly celebrate ऐसा कुछ करता नहीं हूँ खास, अलग कुछ नहीं करता हूँ. छुट्टी मिल जाएगी तो मेरे लिए छुट्टी है, मतलब एटलीस्ट प्रोडक्शन रहम खाकर सोचेगा इसका बर्थडे बेचारे का, उसी बहाने अगर मेरे को छुट्टी मिलेगी तो आई विल बी वेरी ग्लैड. But where plans are concerned for birthday, I really have no plans. I really don't know यार. I mean, I really don't know what plans I have. But if I get a holiday, I shall be mostly at home. Maybe शायद थोड़ा टाइम के लिए बाहर चला जाऊँ, अगर मेरे दोस्त बाहर लेकर जाएंगे या बोलेंगे बाहर निकलेंगे. That's all. But even बचपन में ज़्यादा लंबे टाइम के लिए मतलब इतना एक्साइटेड कभी नहीं था. And maybe until 5th, 6th standard या 7th standard तक मैं थोड़ा एक्साइटेड था. Max 8th standard, उसके बाद तो मुझे याद नहीं है कि मैं कभी एक्साइटेड था. हाँ, गिफ्ट ज़रूर मिले मुझे. Most of them were very nice, be it from my parents, be it from my... Actually, मेरी मम्मी पापा ने कभी मुझे गिफ्ट नहीं दिया. हाँ, because as I told you, even my family is not exactly to this birthdays ये सब सेलिब्रेट करने वाला. I don't somehow, I've never grown up like that. It's just a birthday, ठीक है, बेटा बोलेंगे कि आशीर्वाद लो भगवान का, टाइम पे नहा लो सुबह आज, नए कपड़े पहन लो, बस थोड़ा बहुत कभी होगा तो मंदिर जाने के लिए लेकर जाते थे. बहुत एकदम छोटा था जब बात नहीं, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया और बात नहीं सुनता था तो बोल देते थे एक बार बेटा मंदिर चले जाओ आज प्लीज़. कभी चला गया, जब कभी नहीं गया. अदरवाइज फैमिली की तरफ से आई डोंट रियली रिमेंबर गिफ्ट्स एज सच. एंड विद फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स और व्हाटएवर यू कैन से, आई डिड गेट फॉर मी मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम आर स्पेशल. I did get them, but nothing, I can't point out any particular gift of any particular person कि ये मेरे लिए स्पेशल है. There are lots, quite lots. मिला है पर मैं honestly वो नहीं बोल पाऊँगा. When I was in Hyderabad, so उस टाइम पे थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट होती थी. मतलब उस टाइम पे मेरे अंदर तब तक एक्साइटमेंट लगभग मर चुकी थी, पर फिर भी दोस्तों के आसपास कि यार जिनको दारू पीना है दारू पियेंगे, आज ये करेंगे वो करेंगे, वो एक्साइटमेंट होती है कि चलो एक मौका है. सो दोस्तों को एक्साइटमेंट थी एक बर्थडे में. आई रियली कांट से व्हाट इट इज़, पर हुआ था कुछ, उन्होंने प्लान किया है एंड आई एंडेड अप बीइंग बिहाइंड बार्स फॉर दैट. सो बीच का आपको जो फिलअप करना हो उस प्लान को फिलअप कर सकते हो. सो या 29 इंडस्ट्री से है यार. दोस्त तो है वैसे. अभी सना भी दोस्त है मेरी, अच्छी दोस्त है. सना इज़ वन आई कैन नेम. देयर आर क्वाइट फ्यू पीपल लाइक हु आर एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, बिहाइंड द कैमरा वाले, वो कई दोस्त हैं मेरे, अच्छे दोस्त हैं मेरे. सना है ऐसे तो अभी तो बहुत टाइम हो गया वैसे तो पता नहीं, अभी उसको मैं याद भी नहीं हूँ, पर आई स्टिल कंसिडर हर अ गुड फ्रेंड. सुकीर्ति कांडपाल, माई फर्स्ट शो था. शी इज़, आई मीन आई हैड अ decent good rap over there. They're not actresses, but someone who's very known otherwise also, Nivedita Basu, she's a very good friend of mine. Nivi, I call her Nivi. She's a very good friend of mine. And there are quite few. अभी तो जामिया है, she's also a good friend. I don't know, I call her Jamia actually. Her name is not Jami, whatever her name is. Bindia. So अब और भी है यार, 4-5 नाम तो निकलेंगे, पर यहाँ अभी आपको 2-6 मैंने 4 दिए. Since the lad turns 29, we thought of engaging him with a fun Best of 29 segment. But since 29 may get too much, we'll do the best of 2. Take a look. बिहार और यूपी. मजाक नहीं कर रहा हूँ यार. अरे ना, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा. I'm being very very honest about it. I really want to. मतलब I haven't बहुत दिनों से कर नहीं पा रहा हूँ. I really want to explore the real Hindi belt of the country. Like I just want to backpack and just go like that without any plans. So last show के बाद मैं सोचा, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार यूपी. I really went deep within the like rural area of the country. Okay. I even want to explore Gujarat for that matter. I want to go towards north also, northeast also. Probably I just want to cross the border and go towards Nepal. उसके लिए वीज़ा नहीं लगता है, सिर्फ पासपोर्ट लगता है कि दिखाऊंगी मैं मेरा पासपोर्ट है. I want to, but Bihar and UP has been in my radar, so but we want to go alone.
एक्टर नहीं होते तो सी आई बीन एक्टिव इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स. आई यूज्ड टू, आई थॉट आई वुड बी somewhere, not somewhere, that I would be probably perceiving sports as my future and something that I would be doing in my life when I was growing up, like for the future. I don't consider these things to be profession. That's the reason I'm not using these words to be profession. Even I don't consider acting to be profession, because there are certain careers I consider them to be like you need to be really passionate to do that. So मैं इसलिए career तो नहीं बोलूँगा, but yeah, I wanted to perceive them for whatever, because so sports is something I always thought I would be part of, and being cricket, that's what I used to play decent soccer, but never really continued. I was an athlete. I was a cross country runner. I used to run long distances. So yeah, so I thought I used to play serious cricket, professional cricket to a certain level, under 16, under 19 for my state. I thought when I was growing कि मैं बनूंगा शायद क्रिकेटर सीरियसली, पर कुछ चीज़ों की वजह से मैं ज़्यादा उसको खींच नहीं पाया. I had to abruptly stop it when I was playing for at a professional level. So हाँ, शायद क्रिकेटर बनता था. अदरवाइज यार यही ऑप्शन था, दो ही है, दोनों में से दो. मतलब ये बाद में सोचा मैंने कि शायद एक्टर बनूंगा मैं, बट यार अच्छा लगा. मैंने कभी नहीं सोचा यार और कुछ, तो दूसरा ऑप्शन तो मुझे नहीं पता. दोनों में से मतलब ये दो करना चाहता था, दोनों में से एक कर रहा हूँ. I would still regret that I didn't pursue my game. I do regret it. For whatever reasons, उस time पे I couldn't. I was helpless. But I wish I did pursue it seriously. Second regret. I have no regrets. That's the only regret I have. That's only one regret I have. Otherwise, I have no regrets. I watched porn in life, as everyone does. So what is dirty? I'm sure everyone does. I did too. And now I don't as such. फैक्ट्स मतलब क्या है, मैं तो मस्ती में बोल दिया, पर और क्या है डर्टी फैक्ट्स, क्या होता है? आई डोंट नो इफ इट्स अ फैक्ट, बट समथिंग पीपल वुड हैव बीन बिहाइंड बार्स आल्सो. आई हैव बीन बिहाइंड 1-2 times, couple of times. Once actually. Second time मैं बोल नहीं सकता हूँ. It was not because it was something I was behind, but yeah, somewhere I was part of it. But I was behind bars for a few hours. That's not, I don't know if it's called a dirty fact, but yeah, something that probably everybody would not know. So I was behind bars. I watched porn. और क्या जानना है यार? I don't know. I don't even know if these two fall under that category, but if they do, then these two. I just told you 2 dirty facts, but if you still think I'm good enough to be watched on TV, to watch me. And thank you. For me, it doesn't really. I'm not a person, but it still means a lot when you people are eager, for my birthday. It means a lot. It genuinely means a lot to me. And I hope you guys have enjoyed जो भी मैंने आज तक काम किया, और अभी जो भी फ़िलहाल जो मैं कर रहा हूँ. So that's all यार. I mean, I feel humbled about that, about these little things, because sometimes it just makes me feel कि birthday है, चलो ठीक है, but activity around me on social network makes me feel nice, humble sometimes. No, not sometimes, always. So yeah, I just want to thank you people for all of this. हाँ यार, ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है. कई लोग मुझसे मेरा बर्थडे कब है मुझे नहीं पता, कब किसने अपने हिसाब से मेरा बर्थडे लिख दिया ऑनलाइन. मेरा जो जन्मदिन है वो 20 जुलाई को है. 20th July. 20, not 28, 20. That's all यार. I just want to say I love you guys. I wish if I had a chance, I had an opportunity, I would personally say tell these 3 words to each and everyone who did watch my work and who appreciated, criticized, everything. So that's all, and thank you for wishing me for my birthday and being eager, being active on being social network and anything. And thank you India Forums too, and thank you. Shravan, hope you enjoyed this birthday with India Forums. Once again, we wish you a very happy birthday. Ashima Chavra, cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Shravan. You're watching India Forums. And to watch them online, do subscribe their YouTube channel called India Forums.